हेलो चेक हेलो बस ऑडिबल होची समस्ते टिके कमेंट रे बॉक्स रे रिप्लाई करंतु शीघ्र। तृप्ति, प्रियंका, अर्चिता, श्रद्धा। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तीस जन पिला अछ 30 जन पिला भितरे आमे चेष्टा करिबा जो पर्यंत 50 न होइचंती से पर्यंत सार निज मुह आज सुंदरिया मुह देखेबे नाही। अरे आरसीबी प्ले ऑफ रे गला कोन हला सेठी तमरो फाइनल जितिबनी सी। ओयूटी पूरे फोकस करो पिला माने। ओयूटी अछि 4 तारिख रे आईपीएल फाइनल तुमको किछि लाभ दबनी। ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो वर्तमान आपन सामने रे आपन आगे रे आसुचंती आपन प्रिय युधिष्ठिर सर। गुड इवनिंग एवरीवन। ओम प्रकाश, जाग्यसेनी, श्रद्धा किटू, सिक्की, एमडी कौसर, संदीपन, अर्चिता, वेलकम। ओके 34 वाचिंग तो इमीडिएटली हमर 50 हबो तो हमें संग संग क्वेश्चन स्टार्ट करिया। एंड जेमति कि मैक्सिमम कमेंट थिला कि ह्यूमन फिजियोलॉजी रो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने पे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी रो बेसिकली हमें पाया है कि दैट इज सर्कुलेशन एंड आल्सो दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड आल्सो दैट इज हार्मोन। तो यही सब क्वेश्चन को मिसई करी हम आनी ह्यूमन फिजियोलॉजी रो। संदीपन, अंकिता, गुड इवनिंग एवरीवन। 35 वाचिंग तो इमीडिएटली हम स्टार्ट करिया। आई थिंक 2 to 3 मिनिट्स भीतर स्टार्ट करिया। ओके जागेशनी, दीपांजलि, ठीक अछि। तो चलो स्टार्ट करियो। फर्स्ट क्वेश्चन, parasympathetic neural signal decrease the cardiac output by। देखो sympathetic and parasympathetic तुम भल से जानि जो that is sympathetic nerve fiber which is important to increase the heartbeat and the parasympathetic nerve fiber which is important to decrease the heartbeat। ताहले तुम आंसर दियो। that is क्वेश्चन पचारछि कि parasympathetic neural signal decrease the cardiac output by। parasympathetic टा cardiac output को decrease करे केमती। सब नंडा मुंड को देखि भल लागिलानी सेति क्या। तो parasympathetic neural signal decrease the cardiac output by that is C। हमें जानि छे decreasing the rate of heartbeat and also decreasing the speed conduction of action potential। So both are very important। मन रखिबो sympathetic nerve fiber which is important to increase the heartbeat and parasympathetic nerve fiber is important to decrease the heartbeat and parasympathetic nerve fiber टा जनरली heartbeat को decrease करछ माने ultimately cardiac output decrease जब हमें जानि छे formula of cardiac output। Anyone? What is the formula of cardiac output? Who can say what is the formula of cardiac output? What is the formula of cardiac output? सदा किटू आंसर दियो। सारा जो ऑनलाइन देखिया से तोळकू बट एबे आंसर दियो। दैट इज कार्डियक आउटपुट रो फार्मूला कोन हम जानि छे स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। सो जदी कार्डियक आउटपुट जनरली डिक्रीज हो बा हम जदी कहया पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर ता जदी हार्ट बीट को डिक्रीज करछि बा हार्ट रेट को डिक्रीज करछि तो अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो। बोथ आंसर ए एंड बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट इंक्रीज कोन हो? हार्ट बीट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। समजित, लिपिका, परफेक्ट। को कि हार्ट बीट इंक्रीज 46 वाचिंग। आउ सब पिला कोडा गले? ठीक अछि, समस्त आंसर बढ़िया अछि। दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। हार्ट बीट इंक्रीज ऑन स्टिमुलेशन ऑफ sympathetic nerve fiber, on stimulation of vagus nerve by parasympathetic nerve fiber, by adrenaline secreted by the adrenal medulla। ना both A and C।
केतबेले जनरली हमर हार्ट बीट टा इंक्रीज होय हमें जानिचे that is there is a gland which is responsible to increase the heartbeat and the gland is that is adrenal gland and adrenal gland ro generally dita ba adrenal gland को हमें जदि कहिबा that is adrenal gland ro there is a cortex part and there is a medulla part. So generally medulla part release करे ଗୋଟେ hormone that is called as adrenaline and adrenaline hormone is highly responsible to increase the heartbeat. तो आंसर कोन होबो adrenaline होबो and also sympathetic. Already हमें first question रे कहिचे sympathetic nerve fiber is important to increase the heartbeat and parasympathetic nerve fiber is to decrease the heartbeat. तो increase पचारछि माने sympathetic nerve fiber and also adrenaline. Adrenaline कोन करे heartbeat को increase करे जाका हमें generally emergency hormone बोली कहउचे. यदि फॉर एग्जांपल कौन सी कॉज रो तुमको कुकुर बुकुर की जेडी संड फंड गोड़ेला कि सडनली तुम घर बाहर के जाउछ एंड किछि घोस्ट देखुछ कि एनी डर तो डरिया टाइम रे हार्ट बीट जो सडनली तुम इंक्रीज होची ड्यू टू द रिलीज ऑफ हार्मोन फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला दैट इज एड्रेनालिन. इंपोर्टेंट मन रखिबो. विजय लक्ष्मी सर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास ऑलरेडी किछटा हेइ एंड तुम देखिबो जे कि प्लेलिस्ट रे एंड आल्सो दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास रेगुलर बेसिस रे होबो. फ्लाइट फाइट एंड फियर जनरली आकु हमें जनरली कहि परा 3F हार्मोन बोली बा फ्लाइट फाइट एंड फाइट तो डर भय टाइम रे बा इमरजेंसी हार्मोन बोली हमें कहि परा एड्रेनल. ओके तो मते को कि दैट इज एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड. एड्रेनल ग्लैंड ता कोठी लोकेशन अछि बा एड्रेनल ग्लैंड रो लोकेशन ता कोठी. एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द किडनी located on the liver located on the heart. Where is the adrenal gland is located? कोन हबो एड्रेनल प्रीतियोस्ना 3T. एड्रेनल ग्लैंड रो लोकेशन कोठी. Thank you, Abhijit. Above the kidney, strictly you have to remember that is the adrenal gland is located anterior portion of the kidney. चलो next question चलो. Question number 3. Select the total number of incorrect matching from the following. आंको भितरु टोटल केतेटा इनकरेक्ट अछि. बढ़िया क्वेश्चन आराम से पढ़ो पूरा पूरा मस्त कर पढ़ो एंड आंसर दियो. जमा तरबर रे आकु ताकु देखि के आंसर दियोनी भल से पढ़ो. ईसीजी रो फुल फॉर्म कोन above the kidney परफेक्ट. किडनी रो अपर पार्ट बढ़िया अछि दैट इज द एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड above the kidney. रेडी. Select the total number of incorrect matching from the following. ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ठीक ना भूल अछि. ECG रो फुल फॉर्म ठीक ना भूल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. बी देखो ECG तो ठीक अछि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. देन हम जति का AVN बा जनरली आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड ठीक अछि. SA नोड साइनो आर्टेरियल नोड ठीक अछि. WBC व्हाइट ब्लू सेल दिस इज रॉन्ग एंड RBC रेड ब्लड सेल भी कहि परिया. सो दैट आंसर केतरा इनकरेक्ट लागुस तुमको एठी केतरा इनकरेक्ट गोटे इनकरेक्ट ना. जनरली ECG रो फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहि परिया. ECG जोटा कि हमें जनरली मेजरमेंट कले बा दैट इज जो मशीन टा लागे बा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टा कहा जाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड जो मशीन टा लागे दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. आ मशीन टा कोड लागे दैट इज द लेफ्ट रिस्ट राइट रिस्ट एंड आल्सो लेफ्ट एंकल. लेफ्ट रिस्ट राइट रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल रे दैट इज ECG लागिवो एंड मशीन रो ना होची इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड तार जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टा को कहा जाय इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ठीक अछि. एट्रोवेंट्रिकुलर नोड ठीक अछि. साइनो आर्टेरियल नोड ठीक अछि. WBC व्हाइट ब्लू सेल दिस इज रॉन्ग एंड RBC रेड ब्लड सेल. तो गोटे ही हमको इनकरेक्ट लागुची ठीक अछि दैट इज A. बढ़िया अछि. चलो एट मते को दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट. आको भितरु कहा को हमें जनरली पेस मेकर ऑफ हार्ट बोली कहि परिया. पेस मेकर ऑफ हार्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट. शिवानी तृप्ति श्वेत प्रज्ञा ऋतुपर्णा अभिजीत कौन हो दैट इज पेस मेकर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज SA नोड. देन सेकंड क्वेश्चन वेयर इज द SA नोड इज लोकेटेड. सेकंड क्वेश्चन आई थिंक ए कलर टा बढ़िया अछि मस्त देखा होतियो कैमरा रे ए कलर टा. ओके तो मुरली सर चूज करिन दे कलर टा मस्त कलर टा पूरा. दैट इज वेयर इज द SA नोड इज लोकेटेड. सर हमें SSP TGT बायोलॉजी क्लास कर परियो 100% कर परियो. क्वेश्चन पूरा एई वाला क्वेश्चन तो जो भी एग्जाम हो क्वेश्चन तो समान ही. राइट एट्रिया SA नोड रो लोकेशन होची राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया. सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हमें जानिचे दैट इज हार्ट रो स्ट्रक्चर एई वाला नुह. हमें हमरो दैट इज गोटे माइंड रे से हार्ट रो स्ट्रक्चर बट हार्ट रो स्ट्रक्चर जस्ट क्लींस फिस्ट बा जाको होचे आंगुठी के मुठा कले जो वाला देखा जाए. तो जनरली दिस इज द राइट एट्रिया एंड दिस इज द लेफ्ट एट्रिया. दिस इज द राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड हमें जानिचे SA नोड इज लोकेटेड
right upper corner of right atria right upper corner रे SA node is located and SA node जे कि electric pulse generate करे so that it is called as pacemaker of heart. And next question, human heart is called as in neurogenic in nature or myogenic in nature? Subhasmita को right upper corner right atria Subhasmita perfect. Priyanka, Mitu, Abhijit को कि that is human heart is neurogenic in nature or myogenic in nature? Right corner अंकिता बढ़िया अच्छी, that is human heart is myogenic in nature. चलो then मते को कि एठी that is what is the lifespan of RBC? What is the lifespan of RBC? RBC ର lifespan कोन? What is the lifespan of RBC? RBC ର lifespan 110 days ना 120 days? 120 days. Then RBC ର color red color due to presence of a complex called as hemoglobin. Hemoglobin that is iron containing complex protein. तो मते को कि hemoglobin रे iron रो oxidation state केते? Fe+2 ना Fe+3? What is the oxidation state of iron in hemoglobin? कौन हबो? 120 days perfect. गायत्री, विजयलक्ष्मी, स्वाति, गीतांजलि बढ़िया अछि. संदीपन 120 days. That is हम जानि छे the lifespan of RBC is 120 days and the color of RBC is red color due to presence of hemoglobin. And in hemoglobin there is a metal present called as iron and iron रो oxidation state Fe+2. चलो next question जा. Heartbeat is accelerated by sympathetic nerve fiber and acetylcholine, cranial nerve and adrenaline, cranial nerve and acetylcholine, ना sympathetic nerve fiber and epinephrine. Adrenaline और epinephrine, noradrenaline और norepinephrine ये सब रिलीज हुए adrenal gland रू. तो जनरली हार्टबीट टा एक्सीलरेटेड की करे हम जानि छे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर करे Fe+2 बढ़िया. अर्चित साहू डी ठीक अछि, दैट इज सिंपैथेटिक नर्व फाइबर एंड एपिनेफ्रिन. मते को कि एपिनेफ्रिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम व्हिच ग्लैंड? जनरली को ग्लैंड रो एपिनेफ्रिन सिक्रेटेड हुए? लिवर, हार्ट ना किडनी? फ्रॉम व्हिच ग्लैंड द एपिनेफ्रिन इज सिक्रेटेड? हार्ट, लिवर, किडनी ना adrenal? From which gland the epinephrine is secreted? कौन हबो? Heart, liver, kidney, adrenal, right? Then मते को कि epinephrine is secreted from adrenal cortex ना adrenal medulla? Adrenal cortex ना adrenal medulla? From which structure? बा adrenal cortex रू ना adrenal medulla रू? That is the epinephrine will release. लिपिका, श्वेता ठीक अछि, adrenal. अंकिता, जतिन बढ़िया अच्छी समस्त का आंसर, दैट इज कहबा हमें एड्रेनल मेडुला. एपिनेफ्रिन इज रिलीज फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला. ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. बॉडी हैज द कैपेसिटी टू अल्टर. हमर बॉडी पाखरे कैपेसिटी अछि, दैट इज कोन करि परियार? स्ट्रोक वॉल्यूम, एपिनेफ्रिन, एड्रेनल मेडुला. दीप्ति, निवेदिता, प्रियंका, तृप्ति, गायत्री, अंकिता, शुभ्रा, ओम प्रकाश बढ़िया अछि. क्योंकि बॉडी हैज द कैपेसिटी टू अल्टर स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ऑल ऑफ दिस. कौन आंसर? बॉडी हैज द कैपेसिटी टू अल्टर स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट, ऑल ऑफ दिस. कौन आंसर? दैट इज ECG. You can say that electrocardiograph and also electrocardiogram. And electrocardiograph, this is the machine. That is machine according to NCERT तार तीनटा electrical cord, गोटे electrical that is the left wrist and out electrical cord is the right wrist and another one is left ankle. And generally is that is electrocardiogram होची the graphical representation of electrocardiograph. The body has the capacity to alter stroke volume को alter करि परिबो and also heart rate को भी बढ़ाई परिबो and also cardiac output को बढ़ाई परिबो. ताले all of this answer कोन हबो? All of this जो मानकर D option से मानकर perfect. That is graph is the machine. Gitanjali perfect. Electrocardiograph is the machine and the graphical representation of electrocardiogram. Ankita all of this बढ़िया ठीक अछि. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हार्ट रेट जदि हमें कहया नॉर्मली पर मिनिट रे केते? 1 मिनिट रे 72 टाइम्स. तो मते को कि दैट इज 1 कार्डियक साइकिल केते टाइम? 1 कार्डियक साइकिल जनरली केते टाइम? 1 कार्डियक साइकिल 0.6 सेकंड, 0.7 सेकंड, 0.8 सेकंड. गोटे कार्डियक साइकिल टाइम केते? 0.1, 0.4, 0.1, 0.7, 0.8 सेकंड. For each cardiac cycle the यदि कहया टाइम केते? D ऑप्शन 0.8 सेकंड. Then next question 0.8 सेकंड भितरु
आर्टेरियल सिस्टोल केते टाइम आर्टेरियल सपोज आमे जदी करिबा 0.8 सेकंड भितरु 0.8 सेकंड भितरु आर्टेरियल सिस्टोल केते 0.1 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल केते 0.3 सेकंड then already 0.4 second is called as joint diastole ready habo next question chalo pade achi Vijayalakshmi Gitanjali to obtain the standard ECG a patient is connected to the machine with 3 electrical leads attached to the following parts except generally जो ECG रे हमें लगाए तीनटा इलेक्ट्रिकल कॉर्ड तो तीनटा इलेक्ट्रिक कॉर्ड कोठी कोठी लागिवो आ कोठी न लागिवो बा एक्सेप्ट पचार्स ऑलरेडी म तुमको एटा दी थर रिपीटेशन कर साइलानी कि दैट इज ECG रे तीनटा इलेक्ट्रिकल कॉर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कोठी कोठी लागिवो दैट इज लेफ्ट रिस्ट राइट रिस्ट एंड लेफ्ट एंकल ताले कोठी लागिवोनी एक्सेप्ट पचारची लिपिका बढ़िया अछि जतिन अर्जिता एंड श्रद्धा किटू गीतांजलि प्रियंका अर्चिता शुभरा ब्रिजेश तृप्तिमयी सौदामिनी स्वाति ओके कौन आंसर दैट इज राइट एंकल तीनटा इलेक्ट्रिकल कॉर्ड स्ट्रिक्टली मन रखिबो दैट इज कोड कोड लागिवो राइट रिस्ट and left wrist and left ankle right ankle रे लागिवो नाही चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो पढे अछि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग तो करेक्ट स्टेटमेंट टा चूज करो ECG is of great clinical significance now by counting the number of QRS complex in given period we can find the pulse rate कोटा पचारछि करेक्ट and correct तो इट देखा होछि ECG is a great clinical insignificance पचारछि एटा भूल then the contraction of atria रा contraction starts with starting of Q wave हम जानि छे जनरली PQRS रे P का को रिप्रेजेंट करे atrial systole बा atria रा contraction तो QRS का को ventricular systole बा ventricular रा contraction बा ventricular contraction ventricular systole बा ventricular contraction then T represents का करिवो that is the depolarization of ventricle ताले एटा भी तो हबोनी T wave represent the repolarization of atria नाही T wave होची that is हम कहबा repolarization of ventricle ताले एटा भी हबोनी ताले आंसर कोन हबो को B ओके B एट देखा होची ECG टा होची great clinical significance हबो and the contraction of atria starts with P wave and the P wave represents the repolarization of ventricle चलो next question electrocardiogram is a measure of heart rate को measure करे ना ventricular contraction को measure करे ना volume of blood pump को measure करे ना electrical activity of heart कहा को measure करे कौन हबो electrocardiogram is a measure of heart rate ना ventricular contraction ना volume of blood pumped ना electrical activity of heart electrical activity of a heart I think समस्त ठीक अछि विजयलक्ष्मी सत्य शिवानी वॉइस ऑफ कृष्णा ऋतुपर्णा अर्चिता विजयलक्ष्मी ओके तो कौन हबो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज ए मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द गिवन फिगर तो ए गिवन फिगर ए बी सी डी तो जो माने एनसीईआरटी डायग्राम टिके खाली देखिथिबो तो एतरे तमे आंसर आराम से करि परिबो पूरा डायरेक्टली एनसीईआरटी डायग्राम टा हला तो हम जानि छे जनरली फर्स्ट कोन हम जानि छे मसल देन मसल भितरे हम कोन पाया सपोज दिस इज द मसल एंड मसल भितरे मसल बंडल पाया मसल भितरे मसल बंडल भितरे सपोज दिस इज द मसल एंड मसल भितरे हम मसल बंडल देन मसल बंडल भितरे मसल फाइबर को जनरली हम कहउछे मसल सेल हला सपोज एतरे डायग्राम टिके करछि 1 सेकंड सपोज दिस इज द मसल सपोज दिस इज द बाइसेप मसल एंड सपोज दिस इज द बाइसेप मसल ऑफ अभिजीत सपोज दिस इज द बाइसेप मसल ऑफ अभिजीत एंड मसल रे एबला छोटो छोटो स्ट्रक्चर पाइबो दैट इज कॉल्ड एज मसल बंडल एंड मसल बंडल को अदरवाइज कॉल्ड एज fascicle सपोज दिस इज द मसल बंडल दिस इज द मसल पूरा बड़ सर्कल टा मसल बंडल भीतर छोटो छोटो मसल फाइबर तो ये जो मसल फाइबर रहिला तो मसल फाइबर को सपोज हम जूम कले
तो जनरली मसल फाइबर रो सपोज दिस द मसल फाइबर रो आउटर लेयर को कहा जाए सार्कोलेमा तो आउटर लेयर ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा देन मसल भितर जो साइटोप्लाज्म ताकू कहा जाए सार्कोप्लाज्म तो एटे तुम देखि परतो कोन देछि ऑप्शन तो ये जो छोट छोट स्ट्रक्चर डीटा कोन हेतिरो डीटा हे परियो मसल बंडल हे परियो एंड मसल बंडल इज अदरवाइज कॉल्ड एज फासिकल सपोज ए बड़ स्ट्रक्चरटा होछि मसल ता भितर ए जो छोट छोट स्ट्रक्चर गुडा रहला आकू कहा जाए मसल बंडल तो डीटा मसल बंडल फासिकल मसल बंडल इज अदरवाइज कॉल्ड एज फासिकल देन जो देखिया मसल बंडल भितर छोट छोट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज मसल फाइबर एंड ए टिके डायग्राम देखाय पनतो तो एटा होछि मसल फाइबर ए जो टिके जूम कराइछि ए होछि मसल फाइबर बा मसल फाइबर को हमें मसल सेल बोली कहउछ एंड मसल सेल आउटर लेयर इज सार्कोलेमा एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म मन रखिबो एंड बी होछि सार्कोलेमा तो आउटर कवरिंग ऑफ द मसल फाइबर देन ब्लड कैपिलरीज द आंसर होछि डी तो एटा इनसाइड डायग्राम आई थिंक तुम टिके मसल फाइबर इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट राइट एंड तुम टिके देखाउन तो डायग्राम टा आई थिंक क्लियरली बट ये तो मानने को चाहिए जदि तुम जनकर मसल को आणुछ देन मसल दैट इज मसल भीतर मसल बंडल देन मसल बंडल भीतर मसल फाइबर देन मसल फाइबर को अदरवाइज कॉल्ड एज मसल सेल एंड मसल फाइबर आउटर लेयर को हमें सार्कोलेमा कहि परिबा बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म ठीक अछि ओके ओम प्रकाश देखिए तुम नोटिफिकेशन देखिए कहिए चलो each organized skeletal muscle in your body is made up of a number of muscle bundle or fascicle muscle bundle is otherwise called as fascicle muscle भितर muscle bundles held together by a common collagenous connective tissue layer called कोन हबो फॉर्म बी केबे रिलीज हबो गीतांजलि एंड तमरो केबे एडमिट कार्ड आसीबो इ रिगार्डिंग रे तुमको कहा हे जिवो ऑलरेडी गोटे वीडियो तुम पाई भी करि के देई देबा ठीक अछि कौन होता आंसर दैट इज हम देखिले दिस इज द मसल एंड मसल भितर दीज आर द मसल बंडल एंड मसल बंडल इज अदरवाइज कॉल्ड एज fascicles तो जनरली मसल बंडल्स आर connected each other by a collagenous connective tissue called as fascia okay perfect lipika shivani b ready चलो नेक्स्ट select the correct matching from the following आको भितर कोटा करेक्ट मैचिंग को एबे ऑलरेडी एटा को डिस्कशन करले करेक्ट मैचिंग शुभश्री विजयलक्ष्मी को कोन हबो करेक्ट ऑर्डर कोन हबो गीतांजलि अर्जिता आकांक्षा तारिणी सरकार एमडी कौसर लिपिका प्रियंका ऑल आमे जानि छे दैट इज एबे कहिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा and cytoplasm of the muscle fiber is called as sarcoplasm and endoplasmic reticulum muscle fiber is called as sarcoplasmic reticulum ताले आंसर कोन हबो all of the above next question चलो sarcoplasmic reticulum is a storehouse of which ion directly inside the question sarcoplasmic reticulum is a store ion of Ankita Trupti a question को आसो question number 12 sarcoplasmic reticulum is a storehouse of which ion calcium sodium potassium iron +2 कौन आंसर ब्रिजेश दैट इज कैल्शियम अच्छा मते को कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम कैल्शियम रा एटॉमिक नंबर कोन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम एनीवन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम 20 ओके कैल्शियम टा को ग्रुप एलिमेंट ग्रुप 1 ना ग्रुप 2 को ग्रुप रो एलिमेंट कैल्शियम ग्रुप 1 ना ग्रुप 2 देखिए वॉइस ऑफ कृष्णा 20 एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम इज 40 एंड इट इज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 शुभश्री कैल्शियम कैल्शियम ग्रुप 2 बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम these are the group 2 एलिमेंट नेक्स्ट चलो 54 वाचिंग एते कम पिला आज कोन आउ को माने जॉइन करना थी तुम मानकर दैट इज जो सांग मान अछन से मानको शेयर करे एते कम पिला कोन 54 पिला 60 मात्र वाचिंग ओके तो दैट इज ग्रुप 2 एलिमेंट बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बैरियम एंड दीज आर द ग्रुप 2 एलिमेंट ओके चलो
सोडियम टा ग्रुप 1 and potassium also group 1. So this is D block element Fe+2. What is the जदि हमें पचरा what is the atomic number of iron? Iron रा atomic number कोन? सर वर्षा होछि नेटवर्क प्रॉब्लम थिबो. 10th रे 90, 12th रे 80, that is 90 plus 80 170. 170 by 2. जदि देखिबा जनरली तमर हे गले गोटे मिनिट देखिदवा चार्ट टा तमर केते रहिबो अप्रोक्सीमेटली वेटनरी पई रेनी डे आज सेति पई केते रहला कर 90% एंड 80%. 90 plus 80 तो अप्रोक्सीमेटली तुमको वेटनरी पई 150 प्लस चाहे भी तुम 90% 90 80 80 माने 160 प्लस 160 प्लस भाभी की चलो कि 155 160 प्लस. चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन होगा. सार्कोलेमा इज ए मेम्ब्रेन फाउंड ओवर द नर्व फाइबर, कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल फाइबर ना हार्ट. कौन होगा स्केलेटल मसल फाइबर ऑलरेडी डिस्कशन करिছে. नेक्स्ट द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ द स्ट्रिप्ड मसल्स. जनरली आमे जो देखिबा स्ट्रिप्ड मसल बा जहा को आमे स्केलेटल मसल बोली कहउचे. तो स्केलेटल मसल रो स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट काहा बोली कहया. जेड बैंड, ए बैंड, मायोफाइब्रिल ना सार्कोमियर. दीटा जेड लाइन रो डिस्टेंस को कहजे सार्कोमियर. सपोज जदि हमें देखिया मसल भीतर मसल बंडल एंड मसल बंडल भीतर मसल फाइबर एंड मसल फाइबर भीतर सपोज दिस इज द मसल फाइबर एंड मसल फाइबर भीतर हमको दैट इज ए बडा लाइट बैंड और डार्क बैंड मिले. लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड. तो लाइट बैंड डार्क बैंड मिले आ जनरली दीटा जेड लाइन भीतर डिस्टेंस को कहा जाए वन सार्कोमियर एंड सार्कोमियर को कहा जाए द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ द मसल. डी. नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्कल ऑफ मैन. जनरली मनुष्यर स्कल रे केते बोन अछि. स्कल बोन तमे ऐड करिवो दैट इज बोथ ऑफ फेस बोन ऐड करिवो एंड द क्रैनियम बा ब्रेन बॉक्स रे ऐड करिवो. तमर फेस रे केतरा बोन अछि टोटल. जदि हम देखिया फेस रे टोटल 14 टा बोन एंड क्रैनियम बा ब्रेन बॉक्स रे 8 टा बोन. कोन कोन फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड, इथमॉइड एगुडा देखि दवा. तो टोटल होछि हम देखिया 22 बोन्स. देखि दबा टिके एनसीईआरटी टिके देखि दबा दैट इज को बोन गुडा को जो 8 टा बोन रहला हमर क्रैनियम रे रहला फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड, इथमॉइड या भीतर कोटा डबल बोन कोटा सिंगल बोन एंड फेस रो बोन गुडा के सब जाको देखि दबा. मैक्सिला, पैलेटाइन, जाइगोमेटिक ये सब बोन गुडा टिके देखि दबा हला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रैनियम ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ. जनरली जो ब्रेन बॉक्स बा जाको मैं क्रैनियम बोली कहउचे एटा केतेटा बोन को नै तयारी. क्रैनियम ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ कौन हम निवेदिता, विजयलक्ष्मी, प्रीति, योस्ना, दीप्ति. आंसर कौन हम दैट इज क्रैनियम ऑफ मैन इज मेड अप ऑफ ऑलरेडी एबे डिस्कशन करले 8 बोन. परफेक्ट. देन मते कहया जदि हम जदि क्वेश्चन पचारिया दैट इज हमर ईच लिम्ब रे एपड लिम्ब रे केते बोन बा जदि हम कहया गोटे पट हाथ रे केते बोन एपड हाथ रे वन साइड हैंड रे केते बोन 30 या 40 30 बोन. तो टोटली ऊपर जदि हाथ गोड़ मिसई दवा दैट इज केते हबो 120. 30 30 60 एंड गोड़ 30 एपड गोड़ 30 दैट इज 60 60 120. ओके नेक्स्ट चलो. वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ. जनरली हमर जो वर्टिब्रल कॉलम रहला मेड अप ऑफ 33 बोन्स, 52 वर्टिब्रा ना 45 वर्टिब्रा ना 23 वर्टिब्रा एंड स्ट्रिक्टली मन रखिया दैट इज कोन हबो वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ each limb possess 30 bones. Subasmita perfect. That is 33 bone. 33 bone 33 bone and 33 bone ता fuse होएगी generally 26 bone. Cervical, thoracic, vertebra, sacrum and that is coccyx बोली कहि परिया बा coccygeal कहि परिया. तो 7 12 5 1 1 fuse होएगी that is total होची 26 bones टा जदी हमें ए दिटा बोन फ्यूज हेकी न हल नाही that is 33 bone. नेक्स्ट कोन हबो that is the number of bones in the vertebral column of man. The number of bones in the vertebral column of a man. तो एक्चुअली एम्ब्रियोनिक स्टेज बेले 33 बोन थाए बट आस्ते आस्ते जतला हमें एज बढ़े तो बोन गुडा को फ्यूज होय बा सैक्रम आ कोकिक्स जो लास्ट दिटा बोन रहले
से माने जनरली फ्यूज हो जाती तो फ्यूज हो गला पर 26 बोन सर्विकल तो कौन ना गुड़ा सब मन रखिबो दैट इज को बोन गुड़ा हम वर्टिब्रल कॉलम रे अछंती सर्विकल देन thoracic then lumbar then sacrum then coccyx cervical thoracic lumbar sacrum and coccyx cervical thoracic lumbar sacrum coccyx 7 12 5 1 1 12 5 16 7 23 24 25 cervical thoracic lumbar sacrum and coccyx. Next question चलो that is the human vertebral formula. Human vertebral formula कौन हो C7 T12 L5 S5 CD4 कौन हो आंसर कौन हो human vertebra formula that is 26 ठीक अछि फार्मूला कोन 33 26 नथिबो तुम क्लियरली मेंशन कराइतिबो जदी दैट इज एडल्ट केस रे अछि तो क्लियरली मेंशन कराइतिबो तो 26 मारिबो एंड जदी नॉर्मल देछि कि दैट इज गोटे एम्ब्रियोनिक स्टेज बा ए बेला जदी क्वेश्चन देला दैट इज 33 बोन वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 33 बट फ्यूज हे गेलो गोटे मनुष्य केस रे देखाउ छी 26 तो ह्यूमन वर्टिब्रल फार्मूला कोन हबो 19C cervical thoracic lumbar sacrum coccyx so that is voice of krishna A that is answer is A cervical 7 thoracic 12 and S5 CD4 ये टोटली फ्यूज है नहीं तो डायरेक्टली फार्मूला टा मेंशन कराई छी cervical thoracic lumbar sacrum coccyx and option 1 correct then the vertebra which bears the whole weight of the skull generally को vertebra टा टोटली पूरे स्कल रो वेट को कैरी करछि हमें जो देखियो कंप्लीटली गोटे स्कल तो जनरली स्कल रो वेट को जो वर्टिब्रा टा कैरी करछि दैट इज फर्स्ट वर्टिब्रा तो जनरली फर्स्ट वर्टिब्रा को हमें कोन कहूचे फर्स्ट वर्टिब्रल बोन को हमें जनरली कोन कहे एटलस ना एक्सिस दिस इज कॉल्ड एज एटलस द आंसर कोन होबो दैट इज एटलस ए एटलस बढ़िया देन चलो in man the ribs are attached to clavicle ilium that is sternum na scapula generally हम जो देखिबा ribs टा काहा को अटैच है आटे ribs हम जानि छे attached back side by the vertebral column and front side by the sternum and sternum is a single bone okay चलो then next question कोन हबो 22 in case of most of the mammals including man and giraffe the number of cervical vertebrae are in case of most of the mammals including man giraffe the number of cervical vertebrae देखो हमें जनरली vertebral column रो बोन उडा देखिले cervical thoracic lumbar sacrum coccyx तो याक भितरु सबुठारु cervical bone केतेटा सातटा so that mean that is 7 perfect 7 cervical होची सातटा thoracic होची 12 टा cervical 7 thoracic होची 12 lumbar होची 5 sacrum 1 coccyx 1 ताले टोटल केते हला 12 5 16 16 एंड 12 5 17 17 7 24 25 26 ओके नेक्स्ट the 8th and the 9th ribs are known as the false ribs because their external portions are attached to generally हमें जो 12 पेयर रिब रहला 12 पेयर रिब भितर हम जानि छे the first 7 पेयर रिब्स को हमें ट्रू रिब्स बोली कहू छे and the 8 9 10th ribs को हमें generally false rib बोली कहू छे बा ताको vertebrochondral बोली कहू छे and that is the last जो 2 पेयर रहला 11th और 12th पेयर जोडा को हमें कहू छे free floating ribs तो क्वेश्चन पचला कि the 8th and the 9th ribs जोडा को हमें false ribs बोली कहू छे 8 9 10th को because their external portion are attached to the costal of the 7th rib they have no costa they are not true ribs कोन हबो B option that is the costa of 7th rib that is 7th rib रे attach हिचो okay the number of bones in face generally face रे केतरा बोन ठीक अछि इट्स ओके शुभंकर इट्स ओके number of bones in face generally face रे केते बोन number of bones in face
12 30 40 14 number of bones in face kete hobo that is D 14. Then axial skeleton is made up of skull only, sternum only na complete vertebral column. आमे जो देखिबा that is हमर completely bone को गोटे होची axial bone and गोटे होची कोन that is आमे जो देखिबा completely skeletal system को केते बारे divide कराई छी axial bone and appendicular bone. तो जनरली जो axial skeleton रहिला बा axial bone रे सब की जीवा हमर skull जीवो, sternum जीवो, ribs जीवो and that is हमें कहबा ribs, sternum, vertebral column and skull. तो कोन होबा skull only ना sternum only ना vertebral column only. तो total all of this. appendicular रे जीवो that is हमर limbs bone जति रहिले. तो कोन होबा आंसर that is D all of this. ठीक अछि sternum होची गोटिए bone, vertebral column होची 26 and generally skull जति कहिया 22 bone. skull रे बहुत cranium जाउची and also face bone जाउची. face bone 14, cranium होची 8टा, frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid, ethmoid. Next, what is the right sequence of bones in the ear ossicle of a mammal starting from the tympanum inwards? Generally right sequence कोन bone रो ear ossicle रो. ear ossicle रे appendicular, axial and appendicular two types of bones. It's two types, right? Truptimay, Parmanik, Nivedita, Akanksha, Sumitra, कोन of answer? What is the right sequence of bones in the ear ossicle of a mammal starting from the tympanic inwards? Malleus, Mis, M-I-S. Malleus, Incus, steps, Mis. Chalo, next. Malleus is a part of forelimbs of vertebrae, a reproductive organ of cockroach, auditory ossicles of middle ear of human. कौन हबो? Voice of Krishna, Saudamini, Archita, Ankita, Shraddha Kitu. Finally answer Arjita, MD, Kausar. को answer कौन हबो? That is malleus is a part of. Malleus is a part of auditory ossicle of middle ear of human. The position of adrenal gland is anterior part of each kidney, posterior part of each kidney, ventral part of each kidney, and dorsal part of each kidney. Where is the location of adrenal gland? Adrenal gland ro location कौन हबो? Anterior part of kidney na posterior part of kidney na the dorsal part of the kidney na the ventral part of the kidney. Already first term कहिछि that is adrenal gland is located anterior part of the kidney. A, that is the adrenal gland is located anterior part of the kidney. Ankita, perfect. Anterior part of the kidney. Next चलो. तो इंडिया तरफ जति सब बैच रे कहूचे तो तुम ऑलरेडी जानिछ जो पिला माने इंडिया पे इंटरेस्टेड अछंती तुम सांग माने की भी कि तुम सान भाई भौणी एनी दैट इज की भी इंटरेस्टेड अछंती तो तुम से मानको रेफर करि परिबो कि इंडिया बैच पे हमर स्पेशल कोर्स भी प्रोवाइड करा होची. तो चलो द टर्म कॉर्टेक्स इज यूज्ड इन जनरली कॉर्टेक्स टर्म टा तुम कोट यूज करि परिबो ब्रेन किडनी एड्रेनल ग्लैंड ऑल ऑफ दिस. कॉर्टेक्स ब्रेन रे हम कहि परिया दैट इज ब्रेन रे कॉर्टेक्स पार्ट अछि एंड मेडुला पार्ट अछि. And also आमे कहि परिया that is kidney रे भी cortex अछि medulla अछि, adrenal gland रे भी cortex अछि medulla अछि. तार आंसर कोन हबो? D. ठीक अछि तो आंसर D. ऑलरेडी तुम जानिचो जेहेतु एग्जाम आसी पाखी आसिलानी तो जहा हेबली तुम पढी के आस्तिबो एंड जे जो मानकर रिसेंटली +2 सरला तो से माने +2 रे भी किछि पढिथिबे एंड जो मानकर दैट इज ड्रॉप अछि बा 1 ईयर प्रिपरेशन अछि तो से माने ऑलरेडी जानिथिबे. दैट इज ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट, the adrenal medulla secrete two hormones called adrenaline or epinephrine and noradrenaline or norepinephrine. These are commonly known as steroids, terpenes, catecholamine, na cytokinin. कौन आंसर? The adrenal medulla secrete two hormones called adrenaline or epinephrine and noradrenaline or norepinephrine. These are commonly called as कौन आंसर? That is C, catecholamine. Perfect. Next, the term cortex is used in generally cortex term टाको तमे कोथरे यूज करजे द ऑलरेडी सॉलाइटा. नेक्स्ट, the emergency hormone and hormones of fight are called as the emergency hormone and hormone of fight का कहया
The emergency hormone and the hormone of fight. सर ऑफलाइन रे ड्रॉप ने कि ओयूटी पाई कोचिंग नेले पूरा 1 ईयर नबा को पड़िबो बुझि पालेन क्वेश्चन टा ओके तार कोन आंसर emergency hormone that is adrenaline and B also noradrenaline तो both A and B next question increase alertness question टा कोडा which of the following effect of adrenaline or आ भितर कोटा होची effect of adrenaline or noradrenaline generally adrenal medulla जो two hormone release हुए adrenaline और noradrenaline यार effect टा कोन increase of alertness बा तमरा alertness को increase करेबो pupillary constriction I think pupillary constriction is wrong pupillary dilation then पाइलो इरेक्शन रुमा गुडा ठिया हो जिवो इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट जल्दी जल्दी डरी गले तुम ऑब्वियसली हार्ट रेट भी इंक्रीज हो इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट जोर जोर ब्रीथिंग नबो एंड स्वेटिंग बा दैट इज झाळ बारिबो ता भितर कोटा दैट इज स्विच ऑफ द अबव एड्रेनालिन तो कोटा एंड एक्सेप्ट कोटा तो इंक्रीज ऑफ अलर्टनेस कोन आंसर आंसर डी ऑल एक्सेप्ट बी ई एफ कहार आंसर 32 आंसर के जण सी ऑल एक्सेप्ट बी देखो जनरली एड्रेनल ग्लैंड रो मेडुला पार्ट रो जो रिलीज हुए एड्रेनालिन तो एड्रेनालिन टा रिलीज होला बेले तमर कोन पाइलो इरेक्शन बा जनरली रूम ऑफ टाकुरी उडी जो इंक्रीज अलर्टनेस जल्दी जल्दी अलर्टनेस हे जो इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट 12 रू 16 टाइम्स तो मिनिट को रेस्पिरेटरी रेट तो सेटा भी इंक्रीज हे जो एंड आल्सो स्वेटिंग हो एंड आल्सो इंक्रीज हार्ट रेट हो बट पाइलो कंस्ट्रिक्शन नो पाइलो डायलेशन तो ऑल एक्सेप्ट बी नेक्स्ट क्वेश्चन Oxygen binding to hemoglobin is directly proportional to carbon dioxide concentration. बढ़िया क्वेश्चन oxygen binding to hemoglobin को generally oxygen टा hemoglobin को binding कला बेले directly proportional to carbon dioxide concentration, directly proportional to carbon monoxide concentration, inversely proportional to carbon dioxide concentration, and independent of carbon monoxide concentration. Oxygen binding to hemoglobin is directly proportional to कौन आंसर तृप्ति C. That is inversely proportional to carbon dioxide concentration, right? Inversely proportional to carbon dioxide concentration. Next question chalo. The most characteristic feature of hemoglobin. Hemoglobin ro most characteristic feature kota? It's red color. Hemoglobin ro red color ta most characteristic features. Na presence of iron most characteristic features. Na its ability to combine the reversibly with oxygen. Na presence of basic protein globulin. Kon hobo? The most characteristic feature of hemoglobin. Hemoglobin रो characteristic features कौन होबो? Finally answer C Totaki 2. Baby Smita sir smile please. Rituparna. The most characteristic that is the its ability to combine reversibly with oxygen. Strictly मन रखिबा काहे कि ना generally हम जानि छे suppose this is the lungs and हम जानि छे that is the lungs रे alveoli is the structure and the functional unit of lungs and alveoli and blood vessel भितरे that is RBC रे थिबा hemoglobin कोन करे ना that is oxygen से bind हुए and hemoglobin oxygen bind हेले complex formation करे oxyhemoglobin HbO2 and generally पुनी again reversible बा again पुनी hemoglobin टा oxygen को छाड़ी दिए बा जनरली डिसोसिएट करे कोठी ना टिश्यू लेवल रे सो जो रिवर्सिबल नेचर जोटा कि कंबाइन करिवो एंड आल्सो डिसोसिएट करिवो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन इट्स एबिलिटी टू कंबाइन रिवर्सिबल विथ ऑक्सीजन ठीक अछि द सी नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट फ्रॉम द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हम जानि छै व्हाट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन when hemoglobin bind with oxygen it is called as that is carboxy hemoglobin plus oxygen that is called as carboxy hemoglobin then that is hemoglobin plus carbon monoxide is called as this is oxyhemoglobin this one is carboxy hemoglobin then hemoglobin plus carbon dioxide is called as carbamino hemoglobin तो क्वेश्चन पचाला कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट फ्रॉम कार्बोहीमोग्लोबिन तो हमें जानि छे जनरली टिश्यू लेवल रे कोन हुए ना हीमोग्लोबिन टा कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करे एंड एट द alveoli साइड जनरली लंग्स रा alveoli साइड रे कोन होबो ना हीमोग्लोबिन टा कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोसिएट करिवो तो एई टाइप रे कंडीशन कोन थिबो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अधिका थिबो एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कोन आंसर
कार्बामिनो हिमोग्लोबिन पद्मालय डी। सौदामिनी विद्यासागर क्लासेस रे ओयूटी पाई ऑफलाइन कोचिंग 1 ईयर पाई प्रिपरेशन दिया होची। तो एईटा जो हमर एबे चलतिला दैट इज क्रैश कोर्स पाई जो माने 2 मंथ क्रैश कोर्स एनरोल करथिले तो ताको पाई प्रिपरेशन पाई दिया होतला। बट जदी जो माने 1 ईयर पाई प्रिपरेशन होक चाहउछथि तो 100% 1 ईयर बैच भी स्टार्ट होची एंड रिसेंटली स्टार्ट होची। तो तुमको एई रिगार्डिंग रे दैट इज मुरली सर अछथि तो मुरली सर कहि देबे। 1 मिनिट वेट करो, मुरली सर तुमको ए विषय कहउछथि सौदामिनी। गोटे सेकंड वेट करो। तो मुरली सर आछथि एंड मुरली सर रिलेटेड तुमको डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे देबे। गोटे सेकंड। थैंक यू सो मच सर। तो सौदामिनी भाया बहुत लोकों मन रे भी क्वेश्चन रही कि आमर 1 ईयर पाई सर आप कौन प्रकार बैच दौरान ना दौना। तो कही रखा चाहिए स्टूडेंट्स जो माने भी आपण माने ड्रॉपर बैच में जॉइन करने चाहते जो मैंने क्रैश कोर्स करूचंती कि क्रैश कोर्स रे जॉइन करिसंती न करिसंती दैट्स डिफरेंट थिंग। जदि भी जॉइन करिसंती कार मन रे कॉन्फिडेंस अछि किछि को कॉन्फिडेंस नाही मध्य। तो जो माने कॉन्फिडेंस लूज रे अछंती टोटली वरी करंतुनी। हमर 27th ऑफ मे रु आमे आपन पई नुवा बैच नै कि आसु ड्रॉपर बैच जोतरे कि एक्सक्लूसिवली ओयूटी पे आपण कोचिंग करि परिबे। ठीक अछि। तो सर ड्रॉपर बैच रो बेनिफिट कोन देखो ड्रॉपर बैच रे पिले बेनिफिट हैला कि आपण माने एथिरे जहा जिंस आपनकर 11 12 रे जो जिंस आपण छाडी दैचंती किबा आपण पहले रे प्रिपेयर करि पारि नांती से सब जिंस को आपण पेपर वे रे प्रिपेयर करि परिबे। एंड जहा भी डाउट्स आपण रही तो टिकी निकी जिंस आपण जोटा जिंस जानि पारि नथबे भूली जाइतबे ता ऊपर फैकल्टीज माने जेमति आपण युधिष्ठिर सर होंतु, बॉटनी रे सूर्य सर होंतु, फिजिक्स रे बनजा मैडम होंतु, केमिस्ट्री रे विश्वरंजन सर किबा चंद्र सर होंतु, एई भली आपनकर जो एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम हमन अछि ओयूटी पई से माने आपन को पढेबे एंड टोटल डाउट क्लियर करेबे। ठीक अछि। तो एग्रीकल्चर वेटनरी एई सब जिंस पई आपन को कोचिंग दिया जिवो। ठीक अछि। तो 27th ऑफ मे रु क्लास स्टार्ट होची। जो माने भी जानिया पाई चाहछो आ कोर्स विषय रे बेसी डिटेल्स ताहाले मु आपन स्क्रीन रे गोटे नंबर लिखि दोची। नंबर हैला आपनकर 9337421183 स्क्रीन रे भी डिस्प्ले होतबो और एई नंबर रे आपन कॉल करंतु ता आपन को डिटेल्स आपन को इंफॉर्मेशन मिलि जिवो। ता सहित जो माने भी चाहूचंती कि सर प्रिपरेशन आमे एठी करिया आसीबु किंतु आमे रहिबु कोठी तो रहिबार भी चिंता नहीं पिला माने हमर दीपू सर बोली जने सर अछंती से आपन को एकोमोडेशन पई बोथ गर्ल्स एंड बॉयज मानन को पई स्वतंत्र हॉस्टल्स रहउची। हॉस्टल रे आपन को फूडिंग रहिबो आपन सिटी रहि के भी पढी परिबे प्लस एटी इंस्टीट्यूट रे भी आपन आसी के पढी परिबे। आ हॉस्टल रे 3 टाइम्स फूडिंग रहिबो। नॉमिनल चार्जेस अछि आपन को कॉल करले आपन कहि देबे। ठीक अछि। यस नयापल्ली पाखरे ही सेंटर अछि। आईआरसी हेल्थ विलेज रे प्लॉट नंबर होची N5/36E ऑपोजिट टू होटल रिची रेजेंसी। ठीक अछि। इन द क्राउन होटल रोड रे जमे जते बेले आईडी मार्केट आडू को आसुचो सेही रोड रे तमे पाइबो हमर इंस्टीट्यूट होटल रिची रेजेंसी ऑपोजिट साइड रे। ठीक अछि। लोकेशन मो देविस्मिता बारिक मो एबे लोकेशन कहि देइछि ऑपोजिट टू होटल रिची रेजेंसी आपनकर N5/36E। ठीक अछि। जो माने भी कांटेक्ट करया पय चाहउचंती नंबर दिया है स्क्रीन रे नंबर रे कॉल करंतु मो डिटेल्स जानिबा पय। कोर्स फीस भी आपण जोटा एक्सपेक्ट न करिसंती से कोर्स फीस रहउची एंड विथ दैट द एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम जोटा कि आपण बहुत बेटर करिबो। ठीक अछि। आ आपनकर डेली रेगुलर परफॉर्मेंस को वाच करबा पय मध्य आमे रखिसु कोन ना डेली बेसिस रे आपण टेस्ट रहिबो, असाइनमेंट्स रहिबो, स्टडी मटेरियल्स रहउची, एक्सपीरियंस टीम्स रहउचंती तो टिकी निकी जिंस आपन को सब जिंस करा जिवो। ठीक अछि। एंड सबुट बढ़िया जिंस पिला माने कि आपण तो एडमिशन करिवे। ठीक अछि। आपण एडमिशन करि सरला परे आपण को संग जदी आपण कोनोसी आपण को फ्रेंड को रेफर करूचंती ताहाले आमे रेफर एंड अर्न स्कीम हमर विद्यासागर क्लासेस रे अछि जोटा कि अन्य कोनोसी इंस्टीट्यूट रे अछि ना नाही म तो जानिनी बट मु जति कि जानि पारे नाही बट इंस्टीट्यूट रे हमर अछि जो रेफर एंड अर्न स्कीम आपण गोटे स्टूडेंट रु मनी सौदामिनी साहू मनी केते एटा आपण कॉल करंतु कोर्स फीस आपण डिटेल्स को आइजबो। ठीक अछि। कोर्स फीस एबे मु पब्लिक रिवील करूनी कोन रिवील करि देले भी किछ असुविधा नाही बट मु चाहूची जो माने एक्चुअली जेन्युइनली चाहूचंती से माने आसंतु एंड हमर नंबर रे कॉल करंतु नंबर दिया जाय छै स्क्रीन रे। ठीक अछि। कॉलिंग टाइम मॉर्निंग 7 AM टू
राति रे 12टा पर्यंत भी आपण हमकु कॉल करि परिबे कोन असुविधा नै ए नंबर रे आपण सकाळ 7टा रु राति 12टा भितर केते बेले भी कॉल करि परिबे ठीक अछि एंड जो माने भी चाहूचंती कि आपण को हम तरफ कॉल जाऊ आपनकर गूगल फॉर्म रो लिंक दिया जाई छी डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जाकी गूगल फॉर्म फिल अप करंतु आमे आपण को कांटेक्ट करके आपनकर जहां भी क्वेरीज अछि आपण को क्लियर कर दिया जिवो ठीक अछि सर मॉक टेस्ट रो गूगल फॉर्म पढिबो पाइबो केमती मॉक टेस्ट रो गूगल फॉर्म पाइबा पई डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि किबा ए नंबर रे तमे डायरेक्टली कॉल करि परिबो 9337 नंबर रे आउ सेटू डायरेक्टली आमे मॉक टेस्ट तमे परचेस करि परिबो ठीक अछि ऑरेंज विद्यासागर क्लासेस लाइव बोली गोटे मोबाइल एप्लिकेशन अछि प्ले स्टोर रे सेठी जानतु प्ले स्टोर रो डाउनलोड करंतु डायरेक्टली आपण सेठू भी परचेस करि परिबे ठीक अछि एनी मोर डाउट्स टाइमिंग फॉर व्हाट सो दीप्ता प्रियदर्शनी रथ कोथि पई टाइमिंग दरकार क्लासेस टाइमिंग मॉर्निंग रे रहिबो इवनिंग रे भी अछि साइमल्टेनियसली बहुत गुडा बैचेस 3टा रु 4टा बैच हमर आबार अछि तो आपनकर मॉर्निंग रे भी क्लास रहिबो संध्या रे भी क्लास रहिबो सर टाइमिंग कॉल करिया पई सकाळ 7टा रु राति 12टा जो टाइम रे भी कॉल करि परिबो सर सिलेबस टिके वंस मोर टाइम क्लियर करि देबे मु आपनका प्रीवियस वीडियो देखिथिली किंतु क्लियर हैला नै वीडियो को आउथरे देखंतु जदि न क्लियर होउची ताले कॉल करंतु ई नंबर रे हो किंबा मते ए नंबर रे भी फोन करि परिबे जोटा कि मु आपनका स्क्रीन रे आ गोटे नंबर दोउची 7735512174 ए नंबर रे मते फॉर सिलेबस डिस्क्रिप्शन किंबा आपनका कोर्स रिलेटेड भी जदि किछि क्वेरी अछि ए नंबर रे भी कॉल करि परिबे ठीक अछि सर एम्स बीएससी नर्सिंग पई किछि कोर्स अछि कि देखो एम्स बीएससी नर्सिंग रो कोर्स सिलेबस भी सेही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रहउची तो कोर्स सिलेबस जेतु सेम रहउची सेम बैच रे तमे क्लास करि कि एम्स बीएससी नर्सिंग पई भी क्लास देई परिबो हॉस्टल सिस्टम तमरो बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल अलग अलग रहउची बॉयज हॉस्टल पई तमरो 3 टाइम्स फूडिंग गर्ल्स हॉस्टल पई भी 3 टाइम्स फूडिंग रहउची हॉस्टल से वार्डन्स रहउचंती सब जिंस अवेलेबल अछि सा ओडिसा बीएससी नर्सिंग पई भी वीडियो आनंतु देखो सिलेबस पूरा माने समस्तकर सेम रहउची तो सेति पई कि अलग अलग क्लासेस करबा टू बेटर गोटे जिंस रे हमें क्लास करिले हमें बेटर ये करि परिबा सर एथिरे 11 ना 11th ना 12 टू अधिक क्वेश्चन आसीबा ओयूटी रे मैक्सिमम तमरा चेष्टा करि देखो हमें जति कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू रहिछि 11th टिके वेटेज अधिक रहउछि 12th रो वेटेज टिके कम रहउछि ठीक अछि ओके तो सर मु क्लास कंटिन्यू करिया को देबा ए दुईटा नंबर पिला माने स्क्रीनशॉट मारि के रखि नियो 7735512174 एंड 9337421183 कोर्स रिलेटेड जहां भी इंक्वायरीज एठी आपण कॉल करि परबे निजरा पर्सनल इंक्वायरीज पई आपण ए नंबर रे डायरेक्टली मो सहित कथा ही परिबे ठीक अछि एठी डायरेक्टली मो सहित आपण मो पर्सनल नंबर मु एठी शेयर कर देछि पब्लिक रे मते फोन करि कि कहीं हैरान करबोनी किंतु मते एथे तमे कॉल करि कि खाली कोर्स रिलेटेड तमे जिंस बुझी परिबो ठीक अछि ओके कंटिन्यू सर कंटिन्यू करिवे क्लास ओके तो तुम जहाँ भी इनफॉरमेशन दरकार थिला ऑलरेडी तुम साथ दे जेछथि तो आउ किछि इनफॉरमेशन दरकार से नंबर को कांटेक्ट करिवो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैन बी प्रमोटेड बाय जनरली ऑक्सी हीमोग्लोबिन माने हीमोग्लोबिन ता ऑक्सीजन को डिसोसिएट करिवो को डिसोसिएट करिवो दैट इज हम जानि छे स्ट्रिक्टली हीमोग्लोबिन बाइंड विथ द ऑक्सीजन एट द alveoli site and the hemoglobin dissociate with the oxygen at the tissue site. The question diffusion of oxyhemoglobin can be promoted by low carbon dioxide, low partial pressure of carbon dioxide and high partial pressure of carbon dioxide. कौन आंसर that is strictly हमें जानि छे ए क्वेश्चन पर तमर होमवर्क क्वेश्चन रहबा आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन तो हमें जानि छे सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ lungs and हमें जानि छे that is hemoglobin oxygen so bind करे कोठी at the alveoli site and हम स्ट्रिक्टली जानि छे hemoglobin oxygen so dissociate होट कोठी at the tissue site hemoglobin oxygen so dissociate हला tissue site रे तो जनरली हम जानि छे ए जगह रे कोन थियो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अधिका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम H+ कम टेम्परेचर कम एंड टिश्यू साइड रे कोन थिबो दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई H+ इज हाई टेम्परेचर इज हाई तो क्वेश्चन पचार छी कोन दैट इज हाई ब्लड पीएच यदि H+ अधिका थिबो दैट इज पीएच कम रह दरकार तो एटा भी होबनी लो बॉडी टेम्परेचर हाई रह दरकार हाई PCO2 दैट इज हाई PCO2 आंसर इज हाई PCO2 ऑप्शन बी 37B that is high PCO2 generally tissue site रे partial pressure of carbon dioxide is high partial pressure of oxygen is low so that is option B
तो नेक्स्ट तुम रहिला द एंजाइम एसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट इन द ब्लड एटा तुम होमवर्क रहिला 38 क्वेश्चन होमवर्क एंड 39 क्वेश्चन होमवर्क तो डायरेक्टली क्वेश्चन केते परसेंट कार्बामिनो हिमोग्लोबिन फॉर्म रे जीवो केते परसेंट बाइकार्बोनेट फॉर्म रे जीवो एई बळे क्वेश्चन देन 40 भी तुम पे होमवर्क रहिला ए तीनटा क्वेश्चन होमवर्क रहिला जो होमवर्क न आछो दे नेक्स्ट क्लास रे को डिस्कशन करिया तो ऑलरेडी मैथ क्लास भी स्टार्ट हे जीवो सो ए तीनटा क्वेश्चन तुम पे होमवर्क रहिला 38 39 एंड 40 क्वेश्चन याको तुम कमेंट रे जणेबो ठीक अछि एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम